Welcome children. Today's worksheet number 34, motion. In this worksheet, we will discuss about distance, displacement and speed. When an object changes its position with respect to other object along with time, this state of an object is called motion. तो बच्चों मोशन क्या होता है? चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम. अगर कोई ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है टाइम के साथ चेंज हो जाती है तो इसे हम क्या कहते हैं? इट इज़ कॉल्ड मोशन. इन फिजिक्स देयर आर टू स्टेट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट. फर्स्ट वन इज स्टेशनरी. स्टेशनरी मीन्स एट रेस्ट और रुकी हुई अवस्था. इन सेकेंड वन इज इन मोशन. Motion means moving state. When an object does not change its position with respect to other stationary object, the object is said to be at rest. Rest वाली कौन सी पोजीशन है बच्चों? रेस्ट में हम तब कहते हैं किसी ऑब्जेक्ट को when an object does not change its position with change in respect to other stationary object. It is called object is said to be or called at rest, like tree, pillar, etc., building, etc. When an object changes its position with respect to other stationary object, the object is said to be in motion, like walking, moving car, etc. So, here one point is important, and that is an object may appear to be moving for one person and stationary for some other. कोई ऑब्जेक्ट किसी पर्सन के लिए मूविंग स्टेट में हो सकता है और सेम ऑब्जेक्ट किसी दूसरे पर्सन के लिए स्टेशनरी हो सकता है या रेस्ट पोजीशन में हो सकता है. जनरली मोशन इज ऑफ थ्री टाइप. फर्स्ट वन इज लीनियर मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन. सेकंड ऑसिलेटरी मोशन एंड थर्ड इज सर्कुलर मोशन. व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर और रेक्टिलिनियर मोशन? व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. जब कोई ऑब्जेक्ट सीधी लाइन में चलता है, स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, दैट इज कॉल्ड लीनियर मोशन. ऑसिलेटरी मोशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन. इट मीन्स अपनी मीन पोजीशन के आगे पीछे मूव होता है, लाइक पेंडुलम. पेंडुलम कैसी मूवमेंट होती है? टू एंड फ्रो मोशन. तो टू एंड फ्रो मोशन फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन. थर्ड is circular motion when an object moves in a circular path, like movement or motion of merry-go-round swing. So three types of motion, and first one is linear, second oscillatory, and third one is circular motion. We know that linear motion is the सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन. कौन सा मोशन सिंपलेस्ट टाइप है? लीनियर. लीनियर मीन्स मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन. टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड टू स्पेसिफाई रेफरेंस पॉइंट. किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को आपको स्पेसिफाई करने के लिए हमें क्या ज़रूरत होती है? वी नीड रेफरेंस पॉइंट. दिस रेफरेंस पॉइंट इज़ कॉल्ड ओरिजिन. यानी कि किसी ऑब्जेक्ट का ओरिजिनल पोजीशन. द रेफरेंस पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिसाइड वेदर द ऑब्जेक्ट इज़ इन मोशन और रेस्ट. हम रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन से क्या पता लगा सकते हैं? दैट एन ऑब्जेक्ट whether the object is in motion or is in rest. Whenever an object moves its
reference point, it covers a distance in a time interval. तो जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता है अपने रेफरेंस पॉइंट से, तो क्या करता है? इट कवर्स डिस्टेंस इन ए टाइम इंटरवल. The length of actual path traveled by an object is called distance. Distance क्या होता है बच्चों? The length of actual path traveled by an object. It is scalar quantity. Scalar quantity means इसमें it has no direction. It is always positive and can't be zero. जीरो कभी नहीं हो सकती और इसकी वैल्यू का कैसी आती है? हमेशा पॉजिटिव होती है. एज पर SI सिस्टम it is measured in meter. So SI unit of this distance is meter. Now the distance traveled by an object from its initial position origin to its final position is called total distance whenever the shortest distance between the initial position and the initial position of the to the final position is called displacement. तो बच्चों displacement क्या होता है? Shortest distance covered by an object between the 2 points, it is that from initial point to final point. Initial point से final point के बीच का shortest distance is ये इसको हम क्या कहते हैं? It is called displacement. And it is a vector quantity means जब हम displacement measure करते हैं we also हमें अब ध्यान में रखना पड़ता है डायरेक्शन को. It also indicate direction. It can be positive, negative और zero. ये कैसे हो सकता है? Displacement may be positive, value of displacement may be negative और it may be zero. Zero भी हो सकता है, positive भी हो सकता है और negative भी हो सकता है. SI unit of displacement is also meter. Here an example is given to you. In this, an object is placed on initial point of an object is A. It traveled to B and covered 3 meter distance. Then it traveled to C and covered 4 meter distance. So total distance covered by this object is 3 meter and 4 meter. It means 3 plus 4 7 meter. तो डिस्टेंस कितना कवर करता है ये? 7 मीटर. नाउ डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस means the distance between the A and C. This is the initial point and C is the final point. So distance between the A and C is the shortest distance and it is called displacement. So displacement can be calculated in this example by the Pythagoras theorem. Means 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर और 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों? 9. सो 9 प्लस 4 स्क्वायर 16 इक्वल टू 25 एंड अंडर रूट 25 इज इक्वल टू 5. सो shortest distance will be 5 meter and displacement will be 5 meter. Now we will discuss speed. Speed क्या होती है बच्चों? The distance covered by an object per unit time is called speed. Speed किसे कहते हैं? Distance traveled in a unit time. Distance traveled by an object in a unit time is called speed. It is scalar quantity. इसमें हम क्या करते हैं? डायरेक्शन को मेज़र
नहीं करते या ध्यान डायरेक्शन का ध्यान नहीं रखते. As per SI system, it is measured in meter per second. So SI unit of speed is meter per second. In most of the conditions, an object usually moves with a non-uniform speed. Now, the space of such an object is described in terms of average speed. Average speed क्या होती है? In this way. So you have to give in the method of measuring average speed. Now question arises, what is uniform motion and what is non-uniform motion? तो uniform motion क्या होते हैं बच्चों? When an object covers equal distances in equal time intervals, such motion is called uniform motion. तो uniform motion means इक्वल टाइम इंटरवल्स में अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है देन इट इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन. एंड व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस unequal distances in equal time intervals, this type of motion is called non-uniform motion. अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल्स में अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर करता है देन इट इज़ कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. तो जनरली मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में रहते हैं. नाउ हाउ वी विल फाइंड आउट एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? एवरेज स्पीड को हम v से डिनोट करते हैं. v इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड, इट इज़ डिनोटेड बाय s, एंड टोटल टाइम टेकन, इट इज़ डिनोटेड बाय t. इट मीन्स v इक्वल टू s अपॉन t. व्हाट इज s? s means total distance covered by an object, and t is the total time taken to cover the distance, total distance. So v equal to s upon t. The state of motion of an object can also be determined by the distance time graph. हम किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्टेंस टाइम ग्राफ से भी मेजर कर सकते हैं. The distance time graph of an object shows its speed. Distance time graph क्या शो करता है? Speed of an object. So there are three types of graph are given to you. First one is straight line. Graph is straight line. It means in the this object is covers equal distances in equal interval of time, and this type straight line shows uniform motion of an object. Second is given to you a parallel line towards the time. It means no distance is covered by an object with time. So this graph shows ऑब्जेक्ट एट रेस्ट. ऑब्जेक्ट कहाँ किस पोजीशन में है? इट इज़ इन स्टेशनरी पोजीशन और एट रेस्ट. थर्ड ग्राफ इज गिवन टू यू. इट शोज अ कर्व लाइन. कर्व लाइन क्या शो करती है? मीन्स नॉन यूनिफॉर्म मोशन. कर्व लाइन शो करती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन. नॉन यूनिफॉर्म मीन्स when an object covers unequal distances in equal intervals of time. So curved line shows non-uniform motion, straight line shows uniform motion, and parallel line towards time shows object at rest. Now we will discuss question answer. First question is differentiate between distance and displacement. So you have to write
or you have to differentiate distance and time. Distance क्या होता है बच्चों? The length of actual path traveled by an object called distance. This one. And it is a scalar quantity. It is always positive and can't be zero. And SI unit is meter. So these are the properties, or these are the qualities of distance. Now we will discuss displacement. Displacement क्या होता है बच्चों? The shortest distance between the initial position, origin, to the final position is called displacement. It is vector quantity. It can be positive, negative, and may be zero. And its SI unit is meter. So you can differentiate displacement and distance. Next question is, a car travel a distance of 20 meter in 5 seconds and then another 20 meter in 3 seconds. What is the average speed of car? So this is a numerical is given to you. You have to find average speed. First of all, we will write the formula of average speed. V equal to S upon T. S क्या है? Total distance covered by an object. So total distance क्या होगा? What will be the value of S? 20 meter plus 20 meter. It means total distance कितना आ जाएगा बच्चों? 40 meter. 40 meter. Now total time T equal to, first time it takes 5 seconds. And second time it takes 3 seconds. So total time 5 and 3, 8 seconds. Now we will put up the value in the formula. V equal to S upon T. So V will equal to S means distance means 40 meter and time is 8 seconds. 8 1 जा 8, 8 5 जा 45 जा. It means V की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 5 and unit of meter per second. So average velocity of an object of the given object is 5 meter per second. Now next question, define speed and write its SI unit. Speed क्या होती है बच्चों? Distance covered by an object in a unit time. It is called speed. Speed को हम कैसे define करते हैं? Distance covered by an object in unit time is called speed, and SI unit of speed is meter per second, or you can write meter per second. Next question is, next question is 4.1, not 4.1, is given distance time graph. In picture you have to give in a distance time graph of 3 objects A, B, C. Which one is moving faster? You have to find which car is moving faster. So A, B and C तीन ऑब्जेक्ट हैं जो जिसका आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है. सपोज ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया? ए ने टाइम सबसे कम लिया. बी ने कितना टाइम लिया? सी पर आप देखिए बी ने ज़्यादा टाइम लिया है कंपैरेटिवली टू ए. एंड सी टेक्स, स्ट्रेट लाइन डालनी है बच्चों.
So distance covered by the object A is highest and time interval is or time is shortest. So which one is moving faster? Answer will be A. A is moving faster than B and C. Thanks for watching.